In a distressing incident from Odisha, farmers in Madhurachuan village of Ganjam district have been forced to destroy their tomato crops after suffering heavy losses. Hoping for a good return, farmers had cultivated tomatoes across acres of land and the harvest was promising. But their hopes were crushed when market prices crashed to as low as just 2 rupees per kilogram. Farmers say the cost of cultivation per acre is around 30,000 rupees. However, they are barely able to recover even 5,000 rupees, making it impossible to cover even the harvesting expenses. Adding to their misery, there are no buyers in the wholesale markets. The produce remains unsold, leaving farmers helpless and frustrated. With no other option left, the distressed farmers plowed their tomato-laden fields using tractors. 2 एकर जगह चाष करूँ टमाटो 100 ट्रे बाहरला हेल्ले कौन सी सुविधा नहीं जे आम चाषी मान आम पारिकुद नहीं कि गोटे गाड़ी रे नहीं कि बुले बुले आसिलु किंतु कोडे हले कहीं किलोट हले भी रखिले नहीं जहाँ फल आम हताश होइकी धीरे घरे बसु बेपारी नहीं सोसाइटी नौ सोसाइटी मोटारू 200 ट्रे नौ गोटे चाषी 200 ट्रे टमाटो बाहर हेल्ले आम चाषी मैंने करू कौन तापाई तो किसी सुविधा नहीं सरकार नुआ सरकार आइले किसी सुविधा करना आमर ये हजार हजार ट्रे बाहर जदि 100 ରୁ 200 ट्रे देवी ओर मास देव ताले समुद्र संके पानी परी किसी भी पानी किंतु गंजाम कलेक्टर सहयोग ओरसमा आसिक 100 ରୁ 200 ट्रे मात्र नहीं हजार हजार ट्रे दिन को बाहर एबी भी जाऊ नहीं।